Hi all the students, welcome once again to ASCAT YouTube channel. My name is Anil Chaudhary and I'm your coach for the VARC section. Students, I know a good number of students are waiting for a dedicated series on VARC on this channel. Anyway students, here we begin. And this becomes the first guidance video, and in the coming 6 months, targeting CAT 2025, you will get at least 2 videos a week where we will actually keep guiding you, and we will also post a few content videos as well. But at the same time, students, I must say, if you people are damn serious for CAT 2025, and in case if the confidence for VARC is not there, I think you should never take a chance. It's always better to become the part of a complete dedicated course, Mission IIM Possible for CAT 2025. Students, when you become the part of this dedicated course from basics till advanced, we take care of each and everything. Students, we actually come to know what's your loophole, where you people are not able to score high. And when we start with basics to advanced, you gain a lot of confidence. We take care of reading comprehension, we take care of verbal ability, we take care of grammar, vocab, each and everything. So believe me students, the hundreds of students who have become the part of this ASCAT family, for this course, you should also not miss the bus. And this May 29, we are going to start a dedicated new batch. First of all, I would like to motivate all the students to become the part of the complete batch, so that for each and every section, you people can get an opportunity to work under the fantastic mentors of ASCAT. At the same time, in case if you are facing problems only with one section VRC or DILR or Quant, yes, we do have that option also where you can enroll yourself only for one section. So students, what are you waiting for? Install ASCAT application now, explore all the courses. And now students, let us talk about today's agenda. So as you see on the screen, we are going to discuss some very important daily habits. And I believe that students, if you stick to these habits for the next 3 months, immense confidence you people are going to develop. And at the same time, if you become the part of the Mission IIM Possible batch, kamal hi ho jayega, mark my words. Anyway, students, I'll be discussing with you 5 such habits which will actually carry you very far in this battle of VRC. But before that, we need to first understand what is the nature of CAT. And especially students, when I talk about VRC, the biggest problem happens to be there is no prescribed syllabus. I assume that you people very well understand what is the pattern of CAT and what is the pattern of this particular section. But still, in case if you people don't know, बिल्कुल short में मैं बता देता हूँ. Total 24 questions आते हैं इस पूरे section में, and this becomes the very first section of CAT. Out of 24 questions, 16 questions will be based on reading comprehension passages. So 4 passages will be there and 4 questions per passage. हालांकि स्टूडेंट्स ये नंबर बिल्कुल फिक्स नहीं होता. पिछले 3-4 सालों से this becomes the pattern. But there was a time when 5 questions or even 6 questions were based on a passage. तो अगर स्टूडेंट्स हम लास्ट 3-4 साल के पैटर्न को बेस मानकर चलें, तो you people can very well assume that 16 questions will be there. 4 passages, 4 questions per passage. And then students, you are going to have 8 questions based on verbal ability. And when I talk about verbal ability, questions will be like jumbled paragraphs, odd one out, questions like para summary, para completion. So these are the various ways of asking questions. But you people do understand, CAT VARC is all about reading. Not even a single question is directly based on grammar and directly based on vocab. So CAT agar crack karna hai, you like it or not, you love it or not, but you will have to read. So it is better, students, to fall in love with reading. And we have seen many of our students who actually were able to do this and able to excel high in this section. अब students देखो, when we compare VRC with Quant में तो फिर भी क्या होता है, there are some chapters. So one by one, you people can cover the chapters. Even the teacher can remain satisfied कि हमने सारे chapters complete कर लिए, और student को भी लगता है कि one by one मैंने सब कुछ पढ़ लिया, तो I am confident for CAT. But students, when we talk about the VRC section, ऐसा कोई chapter है ही नहीं, understand. And that is the reason किसी भी student के लिए अपने day को plan करना बड़ा tough होता है. Students, they often come to me and say, sir, हमें पता ही नहीं चलता ultimately what we have to study for CAT and for VRC. So anyway, students, the 5 things, the 5 habits which I'm going to discuss now, stick to that, and then you see how wonders happen. So shall we start? Yes, here we go. The very first habit. Just 1 second. So the very first point, read one high quality article daily.
and invest at least 20-30 minutes of time in doing that. And what can be the sources? You can read the editorial articles of The Hindu, Indian Express, Aeon Essays, The Economist, Guardian, New York Times, and Project Syndicate. And at the same time, students, I would like to motivate each and every one. हमें सिर्फ पेपर में पढ़ने की हैबिट कल्टिवेट नहीं करनी है, हमें उसके साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर पढ़ने की हैबिट रखनी है. Ultimately, students CAT is a computer-based test. So you people have to eventually become comfortable reading on screen. If I talk about myself also, अभी स्टूडेंट्स मेरी पेपर में स्पीड बहुत अच्छी है, बट मैं स्क्रीन पर जब पढ़ता हूँ तो मेरी भी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है. बट एनीवे, मुझे कौन सा CAT देना है, बट यू पीपल विल हैव टू. So therefore, read at least one good article on a daily basis. And students, please ensure that the length of the article should be at least 500 words. CAT का कोई भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पैसेज ऑलमोस्ट 450 से 500 वर्ड्स का होता है. So it's always advisable, read lengthy articles so that when you will actually face a CAT RC, you will not feel like the passage was lengthy. तो स्टूडेंट सबसे पहले एक आर्टिकल रोज हमें पढ़ना, अंडरस्टैंड. And students, while reading the article, try to understand the tone, the structure, the arguments given, and जहाँ पर भी जो नए words आते हैं, develop a habit of noting those words. हर word का students, अच्छा एक और चीज़ students मुझे कहते रहते हैं कि sir, when we start reading an article, तो बीच में बहुत सारे words आते हैं. And students, they keep asking कि sir हमें क्या करना चाहिए? While reading the article for each and every word, should I keep referring a dictionary there? My suggestion will be no. Students, once you understand the context of the article, once you understand the tone of the article, try to judge what can be the possible meaning of the word in that given context. Even if the meaning is not known, you people have to apply your common sense to judge. And if you're able to judge that, believe me, students, that becomes the biggest asset for a student. But anyway, once that reading is done, after that, you can refer to a dictionary to find out the actual meanings. And then you compare कि तुमने क्या सोचा था और एक्चुअल में मीनिंग क्या निकला. ये कंपैरिजन अगर स्टूडेंट्स आप देखोगे, मोर और लेस जो मीनिंग है, यू वर एबल टू जज द सेम थिंग. दैट मीन्स यस, नाउ यू हैव डेवलप्ड अ वेरी गुड लेवल ऑफ मैच्योरिटी. तो स्टूडेंट्स, वन आर्टिकल डेली करना ही है, देयर इज नो चॉइस. एंड स्टूडेंट्स, द बेस्ट थिंग इज नो क्वेश्चंस विल बी देयर हियर. हमें सिर्फ उस आर्टिकल को एंजॉय करना है. यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इट. एंड वंस you read the article, always ask a question after that. What is the essence of the article? What is the main purpose of writing the passage? What is the main message the author wants to communicate? Understand. And students, summarize the article in 3-4 bullet points after reading. So this is something which I expect कि हर student को करना ही चाहिए. There is no choice here. Okay? चलिए, coming on students. Coming on the second point, practice 1 or 2 reading comprehension sets daily. And invest 30 minutes of time doing that. In case अगर आपकी English थोड़ी सी weak है, you may start with 1 RC passage on a daily basis. And students, try to solve it. And that's a game of patience. You may not be able to understand the passage at once. Read it twice, read it twice. But slowly, steadily आप देखोगे within a few weeks, you will gain immense confidence. And जब भी students आप questions के answers दो, try to give a logic, a rationale, a reason for each and every answer. If this is the answer, what is the reason for that? And if these are not the answers, why they are not the answers? अब स्टूडेंट्स, ये कंटेंट कहाँ से मिल सकता है? तो कैट के जो पास्ट ईयर्स पेपर्स हैं, यू पीपल कैन स्टार्ट सॉल्विंग दोज पेपर्स. अदरवाइज एस कैट एप्लीकेशन यू पीपल कैन इंस्टॉल. हम अपने स्टूडेंट्स को एक पूरी सीरीज देते हैं वेयर वी पीपल आर एक्चुअली गिविंग डेली प्रैक्टिस शीट्स. एंड द नेम ऑफ द सीरीज इज, एज यू सी ऑन द स्क्रीन, इट इज नोन एज कॉम्प्रहेंडो सीरीज. एंड स्टूडेंट्स, इनमें से बहुत सारी हमारी कॉम्प्रहेंडो शीट्स free of cost भी रहेगी. So you people can install ASCAT application. There you will see one folder, one course, free material for VARC. So yes, a few content videos will also be there, but at the same time, okay, on a regular basis, you people will keep getting this Comprehendo series. So yes, daily basis पर you people can cultivate the habit of solving these passages and the various questions of verbal ability also. But एक या दो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पैसेजेस हम डेली बेसिस पर जरूर सॉल्व करें. एंड स्टूडेंट्स, पूरे पेशेंस के साथ करें. एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो एंड व्हेन यू ट्राई टू गिव अ रीजन फॉर ईच एंड एवरी आंसर, यू विल एक्चुअली कम टू नो हाउ अ पेपर सेटर इंट्रैप्स अ स्टूडेंट. बिलीव मी, मैं अपनी क्लासेस में अभी जस्ट परसों भी मैं एक क्लास ले रहा था ऑनलाइन, एंड आई वाज गाइडिंग द स्टूडेंट्स.
ऐसे 9 पॉइंट्स होते हैं हाउ अ पेपर सेटर entraps a student. The moment you understand these are the 9 traps, believe me, your accuracy is going to improve. So वो 9 traps कैसे identify करना है, we need to understand that also. चलिए, coming on students, point number 3. I do understand vocab को लेकर CAT में direct questions कभी नहीं आते हैं. But still students, vocab plays a very important role because if you have a very good command on vocab, if you're able to understand the nature of the words, students comprehending the passages will become easy for us. अच्छा, सभी स्टूडेंट्स के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सर यू पीपल से दैट keep reading articles, keep reading passages, but the problem is when we read an article, in the very first paragraph we come across 3-4 new words. Now what has to be done? क्या हम हर वर्ड के साथ रुकते चलें, refer a dictionary, find out the meaning? Shall we do this? If we keep doing this, the reading becomes very much disorienting. So what has to be done? My honest advice to all the students, whenever you people are reading any passage, वहाँ पर जब भी कोई नया शब्द आ जाए, please don't refer to a dictionary there and then. You try to understand what is the context of the passage. You try to understand what is the tone of the passage and apply your common sense to understand what can be the possible meaning of this word in this given context. Believe me students, अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो किसी भी वर्ड के मीनिंग को उस कॉन्टेक्स्ट में जज करना विल बिकम इजी फॉर अस. एंड वंस द रीडिंग इज डन, देन रेफर अ डिक्शनरी, ओके, टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ ऑल द वर्ड्स एंड देन यू कंपेयर कि तुमने क्या सोचा था एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग. और अगर तुम्हें लगता है कि मोर और लेस तुमने वही सोचा जो उसका एक्चुअल मीनिंग है, दैट मीन्स यस यू हैव डेवलप्ड अ वेरी गुड मैच्योरिटी इन अंडरस्टैंडिंग द पैसेजेस. So this is how you people will have to do. तो ऐसा नहीं कि हर वर्ड के पीछे ड्यूरिंग रीडिंग वी शुड रन. नो, आप तो रीडिंग करते चलो इवन इफ द वर्ड्स आर नॉट नोन. और वैसे भी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस दे आर एक्चुअली नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर लाइन, ऑन एनी पर्टिकुलर वर्ड. So if you understand the overall essence of the passage, still that is going to be sufficient for us to solve at least 3 questions out of 4. Okay? So students, focus on accuracy, analyze why each option is right or wrong. And third number पर anyway we were discussing 10 नए words. तो 15 minutes का टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करो. अलग से कोई वर्ड लिस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जब आप पैसेजेस पढ़ोगे, आर्टिकल पढ़ोगे, वहीं पर बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे. And students understand the meaning, usage of the word in the sentence, and if it is possible to group and to note a few synonyms also, that is going to help us a lot. And then you people can be careful about roots क्या है, prefix क्या है. So at least not in CAT, but in SNAP, NMAT, the other MBA entrance exams, where vocab plays some important role, so you can be comfortable there. Okay? So the third point is develop a habit of learning at least 10 words daily. इसके बाद स्टूडेंट्स मैं 4th पॉइंट पर आता हूँ. उसके पहले एनीवे स्टूडेंट्स मैंने इसके बारे में बता दिया. तो May 29 दिस बिकम्स द नेक्स्ट डेट. एंड बिलीव मी, ये जो ट्रायो ऑफ 3 A's है, ठीक है, इस ट्रायो के साथ आप एक बार पढ़ के देखो. जस्ट नियत के साथ, डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, एनर्जी के साथ ASCAT is working. You will see like within the next few months, ASCAT is going to take a leading role in the field of CAT online edtech industry. This is what our confidence and this is what our conviction is. Students, इस बैच के साथ जरूर जुड़ो, बहुत मजा आएगा. And then students, coming on the 4th point, read for pleasure. तो सबसे पहले मैंने बोला कि आपको आर्टिकल पढ़ना चाहिए, देन 1 या 2 RC passages हमें डेली बेसिस पर सॉल्व करना चाहिए. एंड देन स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन द 4th पॉइंट, रीड फॉर प्लेजर. स्टूडेंट्स देखो, जब अपन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पैसेजेस पढ़ते हैं तो वहां पर एक टेंशन क्या होती है कि हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. बट स्टूडेंट्स, रीड फॉर प्लेजर. आप किसी बुक को स्टार्ट करो, स्टार्ट रीडिंग. एंड आई मस्ट टेल ऑल द स्टूडेंट्स, अपने पास एक बहुत अच्छी बुक्स का कलेक्शन होना चाहिए. इवन इफ यू पीपल डू नॉट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, still mark my advice, start purchasing at least 1 book a month. Students, आप खरीदना स्टार्ट करो. चलो मैं यहाँ तक कह देता हूँ, मत पढ़ना, but at least develop a habit of purchasing, buying a book at least a month. कोई भी अच्छी बुक कोई रिकमेंड कर दे, उसे खरीदने की आदत डालो.
See, students in India, I see what is the priority of the students. हम 100 रुपीज़ 150 200 रुपीज़ का पिज्ज़ा खरीदने में एक सेकंड नहीं सोचते हैं, पर 100-150 रुपए की किताब खरीदनी हो तो 10 बार अपन सोचेंगे। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है? इवन आई सी पेरेंट्स ऑफन दे डिस्करेज अ स्टूडेंट्स देयर वार्ड्स टू परचेज अ बुक। उन्हें लगता है पहले भी बहुत सारी किताबें खरीदी है, पढ़ता तो है नहीं। पेरेंट्स प्लीज़ कभी मत रोको, ठीक है, बुक्स खरीदने दो। जब वो कॉलेज जाएगा ना स्टूडेंट, तो अपने साथ उसके पास 15-20 बहुत अच्छी बुक्स होनी चाहिए। और जब वो इन बुक्स को लेकर जाएगा, कब तक रेजिस्ट करेगा अपने आप को नहीं पढ़ने से? देखिए, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, अगर बुक्स आपके स्टडी टेबल पर है, कभी ना कभी तो दिन आएगा आप उठाओगे, कवर खोलोगे, उसका प्रीफेस पढ़ोगे, एंड स्टूडेंट्स समडे इफ यू फॉल इन लव विथ रीडिंग बुक्स, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। कोई भी अच्छा सीईओ बहुत अच्छा रीडर होता है, बट इट डज नॉट बिकम अ रीडर आफ्टर बिकमिंग अ सीईओ। He becomes a CEO because he is a good reader. The students, बहुत अच्छी बुक्स हैं। आने वाले दिनों में I'll post a dedicated video where I will guide you which 10 books all the MBA aspirants should definitely read. So Sapiens, To Kill a Mockingbird, Alchemist, Animal Farm, जॉर्ज ऑरवेल की बहुत अच्छी बुक्स हैं। इनफैक्ट किसी को अगर साइंस नॉन फिक्शन पढ़ने का शौक है, यू कैन रीड कार्ल सेगन, यू कैन रीड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग। तो ऐसी बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। और किसी को सिंपल से नॉवेल्स पढ़ने हैं, यू पीपल कैन डू दैट, बट रीड फॉर प्लेजर। तो इवन दिस इज सबकॉन्शियसली गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर हाई इन CAT as well. And then coming on point number 5, weekly add-on, once or twice a week. Watch, listen to interviews or debates. Students, even this helps in developing a very good reading skill. स्टूडेंट्स देखो, रीडिंग केवल इंग्लिश आने से काम नहीं चलेगा, अल्टीमेटली उस टॉपिक के बारे में भी आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी टॉपिक पर इफ यू पीपल आर वेल acquainted, you will see like you'll be more comfortable and confident in reading and understanding the passage, and your accuracy will also be high there. So what will happen? अलग अलग टॉपिक्स पर डिबेट सुनो, स्पीचेस सुनो, यूट्यूब पर स्टूडेंट्स टेड टॉक्स, कितने वंडरफुल स्पीकर्स हैं। सबकॉन्शियसली स्टूडेंट्स वो कब आपको इम्प्रूव करेंगे फॉर CAT पता ही नहीं चलेगा। तो दिस हैबिट एवरी वीकेंड यू पीपल कल्टिवेट। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, वॉट एवर यू पीपल रीड, इफ यू हैव गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, अ पीयर ग्रुप, उनके साथ डिस्कस जरूर करने की आदत डालो। तो व्हेन यू डिस्कस दैट reflection of what we have read, what you have read, will actually help you to make you more active reader and more mature. So students, you like it or not, but please love reading. You fall in love with reading. Reading के बिना CAT को क्रैक करना is not possible. तो 5 tips वापस से रिवाइज कर लें। सबसे पहले, एक आर्टिकल रोज पढ़ना है। सेकंड, 1 या 2 RC पैसेजेस रोज सॉल्व करने हैं। थर्ड, एटलीस्ट 10 नए वर्ड्स हमको सीखने हैं। 4th नंबर पर स्टूडेंट्स क्या करना था? 4th नंबर पे यस रीड फॉर प्लेजर, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स हम कोई ना कोई बुक पढ़ने की आदत डालें। एंड देन स्टूडेंट्स, एवरी वीकेंड यू विल हैव टू लिसन टू सम गुड स्पीचेस, सम डिबेट्स। ओके, so these 5 habits you cultivate, and finally students, take a reminder for 29th May. So thank you very much, see you soon. And अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर सर्कुलेट करना। एंड स्टूडेंट्स, ये 5 पॉइंट्स देखिए, फॉलो फॉर द नेक्स्ट 3 months, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। VARC का इम्प्रूवमेंट एकदम से विजिबल नहीं होता, यू विल हैव टू कीप सम पेशेंस। ओके, so thank you very much, see you soon.